1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. किसी ने सच ही कहा है, सक्सेस इन सीए इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट Stamina. It's not a sprint, it's a marathon. And every session like this is a step closer to that, that final final finish finish line. line. So good evening everyone. This is Ritesh Baghel. This is Abhirami Jeffy, and we are your MCs for the final session of this incredible event. Pragati, a journey of progress rooted in trust. We are officially in the final chapter of this power-packed conference. And before you start feeling emotional, don't worry. We have saved the most taxing topic for the end. Oops, I think I've given it away. Did I say tax, Ritesh? Unfortunately, yes. But don't worry. As they say, save the best for the last. That's right, Ritesh. We are about to dive into knowledge session 4, and it's all about income tax. Now, don't look so serious, folks. We promise there's no actual return filing happening here. Exactly. This session isn't about scaring you. It's about empowering you with the smart insights into the income tax. From clubbing of income and losses to faceless assessments to even cryptos. Yes, those mysterious digital coins that rise and fall faster than our hopes after the exam. Yes, वही crypto, जिसका audit समझो भूत का audit. Technically there, but good luck catching them. तो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड. शुरू किया जाए. शुरू किया जाए. The name that echoes in every CA class, every CA library, and every aspiring CA heart. Please give a huge round of applause for CA Dr. Girish Ahuja sir from New Delhi. And I would like to invite CA Abhinav Malaviya sir to escort CA Girish Ahuja sir to the dais. And I would also like to invite Managing Committee member Mr. Furhan Boharia and Mr. Meet Kothari to the dais as well. Girish sir has been a rank holder at Sri Ram Commerce College, Delhi, and received his doctorate from Faculty of Management Studies, Delhi University. He was a Government of India nominee to the Income Tax Act Redrafting Task Force. Also been an independent director of the Central Board of SPI, Dr. Ahuja is an author of various books on direct taxation and has addressed more than 5,000 seminars organized by the ICAI, ICSI, ICWAI, and Chambers of Commerce. And I would like to invite CA Abhinav Malaviya sir to present a bouquet and a memento to Sir Girish Ahuja sir. Please have a huge round of applause. Give it a huge round of applause. Give it up for our august dais present today. And also on the dais, we have our paper presenters for this session, Ms. Nivedi Jain, Mr. Het Patel, and Mrs. Neha Gupta. Please have a huge round of applause.
truly takes grit and courage to be here and to be heard amidst such an august dais. That being said, I would like to invite our paper presenters for the session to the dais. Once again, give it up for Ms. Nivedi Jain, Mr. Hed Patel, and Ms. Neha Gupta. We sincerely appreciate our paper presenters for taking time out of their rigorous academic and work schedules to research, prepare, and present on this platform. It takes more than just knowledge. It takes commitment and courage to step up and share your voice. And you have done it with true confidence. A huge round of applause for our paper presenters. I request our session expert, CA Girish Ahuja sir, CA Abhinav Malavya sir, and Meet Patel, Farhan Bukharia, to please felicitate our paper presenters. Hed Patel. Please have a huge round of applause. It's not just your income that the taxman will see. Your spouse return may tag along for free. From gains to losses, it's all in one trail. When clubbing begins, there is no room to bail. First up, we have Ms. Nivedi Jain, a CA intern at EY and a CA finalist. A true blue Punekar. वो क्या कहते हैं? मराठी, मुलगी, कर, रानी आणि रंगमंचावर एक योद्धा. Please give it up for Ms. Nivedi Jain. Good afternoon, everyone. My name is Nivedi Jain, and today I am here to present my paper on the topic Clubbing of Income and Set-off of Losses, Smart Tax Planning. Well, I would like to start this session by asking you all a question, which is, what if I tell you that income of some other person could be taxed in your hands, or that your past financial losses could help you reduce your future tax liability? Sounds interesting, right? So today we are diving into subtle yet powerful world of clubbing of income and set-off of losses. So let's begin the session to understand more. The first part of the session is regarding the clubbing of income. So section 60 to section 64 of the Act governs the provision regarding clubbing of income. We will discuss these sections while discussing about the tax planning strategy. So let's quickly begin with our first tax planning strategy, which is in respect of transfer of asset versus transfer of rights. To understand this, let's quickly discuss section 60 of the Act. Section 60 of the Act provides that when a person transfers income to the other person without transferring the ownership of the underlying asset, the income gets taxed in the hands of the original owner, that is the transferor. Now let's take an example to understand this. Mr. Raj owns a property where he runs the business of hostel and earns a rental income of rupees 1 lakh per annum. To reduce his tax liability, he decides to shift this income to his niece, Priya, who is in a lower tax bracket.
By doing this, Mr. Raj is merely transferring the income without transferring any ownership or control of the asset. And hence the provision of section 60 will trigger, and this income will still get taxed in the hands of the transferor. To illustrate this further, let's analyze the case of CIT versus Rangamati Tea and Industries Limited. Here, the assessee took over the possession and management of a tea estate even before the legal title of the estate was transferred. Here, the Kolkata High Court held that since the income was earned from the active management and it was not just a mere transfer of income, hence the provision of section 60 will not trigger. So here's a strategic tax planning strategy that Mr. Raj could consider. Mr. Raj could enter into a formal agreement with his niece wherein he will transfer the operational right in respect of the hostels, including the right to manage, earn rental income, and also bear the risk associated with running the business. By doing so, the provisions of clubbing will not attract. Very interesting, right? So with this energy, let's move ahead with the next strategy, which is in respect of perpetual leases. Now, what is a perpetual lease? It is basically a lease arrangement which goes on indefinitely or for a very long period without any expiry date. To understand this, we will have to analyze the provisions of section 61 and section 63 of the Act. So section 61 of the Act provides that all the income arising to the person by virtue of a revocable transfer will be taxed in the hands of the transferor. Now, what is a revocable transfer, you might ask? So section, again, Income Tax Act, again defines it under section 63 of the Act. Now, a revocable transfer is basically an arrangement wherein the transfer retains the right to retransfer or resume the control either directly or indirectly in respect of the income transferred. So for this, we will analyze the case of KN Rajdhan versus CIT. So here the assessee had purchased flats and started renting them out. However, the legal title was never transferred, and hence the Kolkata High Court analyzed that the terms of the agreement were such that it was a lease in perpetuity. Since lease in perpetuity is not covered under the definition of revocable transfer, the provisions of section 63 will not apply. In our case, what could Mr. Raj do? Mr. Raj can transfer or enter into a long-term lease agreement and ensure that everything is properly documented to avoid the provisions of clubbing. Let's move ahead with the next strategy, which is in respect of trust. Now, before we understand trust-based planning, let's quickly overview how does a trust work. Now, a trust is basically a legal arrangement wherein a person, that is a settlor, person who creates the trust, transfer any property to another person, which is basically your trustee, who manages it on the behalf of a third person, and that third person is the beneficiary. Now, in order to avoid clubbing provisions, three things must be kept in mind. Trust must be irrevocable, the settlor should not be the beneficiary, and trust must clearly define the rights of the beneficiary. Now, where this is given, you might ask. So, we have section 62 of the Act. Now, section 62 of the Act is an exception to the provisions of section number 61. And as per section number 62 of the Act, when any income is transferred to an irrevocable trust, the provisions of clubbing will not apply. So from a tax planning perspective, individuals can transfer their income generating assets to an irrevocable trust to avoid the clubbing provisions. However, one thing to be kept in mind is that the beneficiary cannot be son's wife and spouse, because if it happens, the provisions of section 64 will get triggered again. With this, let's move ahead with the next strategy, which is premarital transfers. This is the most simplest strategy because section 64, subsection 1, clause 4 of the Act provides that any asset
which is transferred whether directly or indirectly to a spouse, without an adequate consideration will get clubbed in the hands of the spouse transferring the income. Here, we will quickly look at the case of Philip Thomas versus CIT. Here, the Supreme Court clarified that the provisions of clubbing will not apply unless the relationship of a husband and wife will exist. So, from a tax planning perspective, couples could consider transferring income-generating asset before their marriage is legally formalized. And with this, we will move ahead with our last tax planning strategy, which is in respect of loan versus transfer. So, under the Act, loan of money does not constitute as transfer of asset and hence does not automatically give rise to the clubbing. For this, let's look at the case of a very famous actor, Shah Rukh Khan. So in this case, the assessee, Shah Rukh Khan, had given an interest-free loan to his wife, Gauri Khan. Now, Gauri Khan used this loan to purchase residential property and jewelry. However, Gauri Khan had her own independent income and she had also repaid the loan during the term. So here the Mumbai ITAT held that loan of money is not a transfer of asset. Wife purchased the asset independently from the third parties. She had her own income and she had also partially repaid the loan, which showed that the loan was a genuine transaction. And hence, since no income yielding asset was transferred, the provisions of section 64 would not apply. However, from tax planning perspective, it is very important to note that this is a very debatable issue and your department may consider this as an indirect transfer because this is a purchase of asset from a loan which is given by a spouse. And it is recommended that the agreement clearly has repayment of loan terms and it is properly documented. With this, the last part is regarding the set-off of losses. Section 70 to Section 74 of the Act defines set-off of losses. The first tax planning in respect of set-off of losses is capital gain harvesting and loss realization. This basically means selling off loss-making units before the financial year ends. The purpose of this strategy is to offset the realized losses against the capital gains to reduce the taxable income. The next strategy is strategic use of house property loss. As per the Act, house property loss can be set off against any income up to a maximum of rupees 2 lakh. So this is very important from salaried individual perspective and people can use this provision to set off house property loss up to 2 lakhs. And the last tax planning strategy is nothing but preserving business loss and prioritizing set-off. So unabsorbed depreciation can be carried forward indefinitely. So from the set-off perspective, it is advisable always to first set off business losses and then the unabsorbed depreciation because it can be carried forward indefinitely. I would conclude this session by saying that tax planning is a silent partner in every successful enterprise. Thank you. Thank you, Ms. Nivedi Jain, for sharing her experience with us. And now, as we move forward, today we have with us a passionate and dedicated CA student from Ahmedabad, who is currently undergoing his articleship and has taken a special interest in the evolving area of faceless assessments. Let's hear it from Mr. Het Patel. Ritesh, you know, I've always wished for one thing during exams. That your examiner forgets to check your paper? Mind reading and all, huh? But more than that, a faceless examiner. No nervous eye contact, no awkward tensions. Just questions, answers, and peace. Oh, then you'll love what the IT department thought of. They gave us exactly that, but for assessment. And to take us deeper into this digital shift where tax meets tech, we now invite our next paper presenter, Mr. Het Patel. A huge round of applause for Mr. Het Patel. Yeah. Hi. Good evening, good afternoon, everyone. This faceless assessment is a very new topic for few of you. So
I would like to start with a story. For this story, I wanted to go with some character which we all know and can connect with. So, enter into the scene Mr. Jethalal. We all know he's a big businessman, has good sources of income, and is an honest taxpayer. But he does have some sources of income which he has not disclosed, like this, and this. So we know what follows next, income tax notices. So in older system, when income tax department would send an assessment order to Mr. Jethalal would have to go and visit the income tax office physically. And the old system was sometimes so inefficient that he would keep waiting for his order and end up getting frustrated. But let's contrast it with the new system. In the new system, all the work could be done by virtual portal. That's the income tax portal, and at the comfort of his own office or go down. So let me introduce myself. I am Het Patel, and today I am going to discuss on faceless assessment and appeals. So we need to understand that this system in a paper-based ecosystem was not a overnight thing. It was introduced as a decades and decade-long evolution, like introduction of pilot projects in 2015 in 5 of the Indian cities, which led to introduction of income tax business application in 2017, followed by e-assessment scheme in 2019, and finally faceless assessment scheme, faceless appeal scheme in 2020. But even before that, government was working behind the scenes by introducing e-filings, revamping Form 26AS, and many other reforms. So you will be asking, Het, why is this change needed? As I said, our old system was inefficient, subjective, and sometimes corrupt. With growing number of taxpayers and our aim to be the third largest economy, we could not keep up. So we needed some system which can efficiently put end to all the pending appeals and new arising appeals. So it was introduced under transparent taxation honoring the honest banner, wherein our Prime Minister also said that the system is introduced with a view to make the whole process painless, seamless, and faceless. Now, we need to understand how does this system work. It sounds so good, so how does it work? So this is the basic sketch of our faceless system, where there is a centralized body, that is an NFAC, and all the units which work behind the scene. Now, to even simplify it further, let's assume this orchestra to be our faceless assessment structure. In this, our master conductor right here is NFAC, whose work is to coordinate the working of all the units within the system. Whenever NFAC gets a case, it allots the case to anywhere in assessment unit located anywhere in this country. You understand? Priorly, your jurisdictional AO was your investigating officer. Now it can be located anywhere in the country. Further, once the case is received by assessment unit, it would analyze the facts and cases and would send an assessment notice to the assessee. Further, once the notice has been received by assessee, he would submit the documents and necessary information, and assessment unit can take help of units like verification unit and technical unit if it requires so. So that is all the tech and all. But what are the benefits? What are the gains from that? So with this system coming into force, what was the main was to increase the efficiency of this whole working and to increase transparency and let public have greater trust in income tax department. The data and automated systems led to greater speeds and efficiency, and the anonymity of the taxpayer and the tax officer led to reduction in corruption and harassments, and also led to fairer outcomes. And as we saw in Jethalal's case, he could do the work from the comfort of his office.
So that led to greater and improved taxpayer experience. Even S.K. Gupta, who was the principal CIT and member of CBDT during that time, he mentioned that this anonymity would help curbing the corruption and harassment. Now, with any new system, there are some bumps. First and the biggest one was natural justice. You might ask, what is natural justice? So natural justice is a legal principle which ensures fairness and impartiality in decision making. So why do we talk about it here? When it came out, the faceless scheme, it gave an opportunity for virtual hearing. But it was at the discretion of the tax officer to give one, which led to series of cases, like some notable cases right here. In this courts were very clear that if taxpayer requests for virtual hearing, he must be provided with one. So that is a big problem, but it has been amended now to give mandatory virtual hearing if the assessee requires it. Now next issue is complex. The system is complex, even for us articles we know. Sometimes income tax portal is an headache. Imagine for a taxpayer who is not experienced, not technically sound, it might be tough to navigate through it. Further, the cases might get transferred to physical assessments, to your jurisdictional AO, which might lead to incomplete assessments. Also, as we discussed, that different units exist. It was introduced to let greater efficiency and expertise get into work. But it also leads to significant time delays and coordination issues. And also, you have curbed the oral representation of assessee. So it has led to certain, what we say, contrasting views of assessee and tax officer. But we need to note that even today, 3 lakh plus cases were pending, which were introduced before the faceless era itself. But the government is working towards it. Even in 2024 budget speech, Nirmala Sitharaman, our Union Finance Minister, said that they are deploying new tax officers to complete and eradicate this backlog. So what? We just keep bickering about what is bad, what is good, or we get solution oriented. We find how to reform this system. So in this, there are a few things which can be looked into to improve the taxpayer's experience and the system itself. First, we need to enhance the communication. The taxpayer needs to be informed at every step so that he can be informed and further he can have a greater trust in the system. Also, we need to provide them with real-time interaction options, which has to be seamless and recorded for the taxpayer to represent himself. Also, we need to revamp the system, bit of improvement in e-filing portals and allowing bulk data uploads and removal of technical glitches can help. We need to be flexible with deadlines and provide for redressal mechanisms and help desk to help taxpayers who are confused or lost in the whole process. So I want to conclude this, but is that easy? What is the answer, whether it is reforming or not? So in this, I would say that there is a great poem by Robert Frost, and the lines, I love it. He says that 2 roads diverged into a wood, and I took one less traveled by, and that has made all the difference. So here, this faceless path might be new, filled with bumps, but we need to use it. If we are planning to be the 3rd largest economy, we need to prepare it. We need to use the tech and AI to propel further and get the revenue that the tax department deserves and the relief that the taxpayer deserves. So that's all from my side, guys. Thank you for being such a wonderful audience. Thank you, the host, for giving me this opportunity and all those who have worked tirelessly. Thank you. This is Seth Patel signing off. My Wow, Ritesh, that was mind-blowing.
Faceless assessment, a lot more familiar, a lot less intimidating. True that, Abhi. Finally, all the way from the heart of Punjab, where tradition meets ambition. Joining us is an upcoming CA from Ludhiana, Ms. Neha Gupta. Abhi, have you ever thought about the type of currency which exists only in our imagination? Yep, my articleship stipend. Alas, that only exists in my imagination. That was hard hitting. Well, I was talking about the cryptocurrency, which operates through a network of computers across the world. No single person or a company owns the system. And to give us a hint about this technology, we have our next paper presenter, Ms. Neha Gupta. Please welcome with a huge round of applause, Ms. Neha Gupta. Good afternoon, respected judges, fellow professionals, and my dear co-presenters. I am Neha Gupta. I've come all the way from Ludhiana, Punjab, and I'm absolutely thrilled to be a part of this energetic gathering. The topic that I've chosen for the presentation is the one which is becoming increasingly important, especially for young taxpayers and first-time investors like many of us. And that is cryptocurrency and digital asset taxation in India, and what every young taxpayer must know about. Imagine this. It's 7 a.m. in the morning, you roll over in your bed, you open your crypto app, and boom. Your investment of rupees 10,000 in a Bitcoin is now worth rupees 1.2 lakh. That too, overnight. You're already planning your Goa trip, lying on a beach, enjoying the view, and just like that, suddenly someone asks, did you pay tax on the income? And then suddenly you realize 30% tax rate, surcharge, cess, and just like that, the party is over. Like many of you, I have watched the crypto space explode, from Bitcoin headlines to friends flexing screenshot of their gains. Since 2021, the crypto adoption among young Indians have surged by over 70%. That means more of us are buying, selling, and investing in digital asset more than ever before. But here's the catch. Not all of us are aware of the tax side of it. Let's look at this cartoon. It is funny, but it's also painfully real. While we all get excited about the profits, we secretly hope that the tax hand won't reach us. But obviously, ignoring tax rules can invite penalties, notices, and even scrutinies. And as chartered accountants and future chartered accountants, that's not the kind of thrill we want in our lives, right? That is why understanding crypto taxation isn't just smart, it's essential. Before we delve into the taxation of cryptos, let's quickly understand what are cryptocurrencies and digital assets. In India, the Income Tax Department uses a term virtual digital asset to cover a wide range of digital instruments. This includes, first, cryptocurrencies. Cryptocurrencies are like digital currencies like Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, and so on. Second, digital assets other than crypto. These are non-fungible tokens. Basically, anything that exists digitally is stored on a blockchain and has an assigned value to it. Now, let's talk about the part which makes most crypto investors nervous: taxes. In 2022, the Income Tax Department introduced Section 115BBH, which states that any income from transfer of virtual digital assets will be taxed at a flat rate of 30%, with no deduction allowed except for the cost of acquisition. That means if you have made a profit of 10,000, you will have to pay 3,000 as taxes. Also, if you have incurred loss, you will not be allowed to set off that loss with the income of any other head and not even against income of another VDA. For example, Aneri buys a Bitcoin and sells it at a loss of 10,000. She also sells Ethereum at a profit of 20,000.
Now, she thinks that she has made a profit of 20,000 and lost 10,000, and that she will pay taxes on net 10,000. But that's not allowed. She has to pay tax, 30% tax on full profit part, that is 20,000, and she will not be allowed to set off the loss of 10,000 with income of another VDA, that is Ethereum in our case, and not even against income of another head, which is like salary, FD interest, etc. Now, let's move ahead and talk about TDS. With effect from July 2022, the Income Tax Department introduced 1% TDS under Section 194S. As per Section 194S, if the total consideration from transfer of virtual digital asset exceeds 10,000 rupees in a financial year, then the buyer is required to deduct 1% TDS on payment made to a resident seller. However, in case the buyer is an individual or HUF who does not have any business income, or having business income whose total turnover does not exceed 1 crore or 50 lakh in the preceding financial year, then such person is required to deduct TDS only if the total consideration exceeds 50,000 in a financial year. Let's understand this better with an example. In scenario 1, Kuldeep is a crypto investor. He is engaged in business, and he also, his turnover from the business also exceeds 1 crore in the preceding financial year. As we can see, he is not falling under the relaxation provided by the department. And so, as we can see, purchase consideration is of rupees 1.5 lakh, which is well above the limit of 10,000, and therefore, TDS will be applicable in his case, and he will be required to deduct 1% TDS on the purchase consideration, which comes to rupees 1,500. Now, on the other hand, Aneri is an individual who is not engaged in business. Let me quote the relevant provision for you again. The provision says, if any individual who is not engaged in business, or not engaged in business but whose total turnover does not exceed 1 crore or 50 lakh in the preceding financial year. So, in our case, Aneri is an individual. She is not engaged in business. So, she is fulfilling the first criteria itself, and thus, we will check, to check the TDS applicability, we will check the limit of 50,000 instead of 10,000. She has purchased a VDA worth rupees 45,000, which is well within the limit of 50,000, and hence, in her case, TDS will not be applicable. Now, let's go beyond just buying and selling crypto. Gifting of crypto. Cryptos received as gift will be taxed in the hands of recipient under section 56 to 10 if the fair market value in aggregate exceeds 50,000 rupees in a financial year. Second, VDA exchange. VDA exchange is basically exchanging one asset for other. For example, exchanging Bitcoin for Ethereum. Swapping one asset or swapping crypto for exchange of another qualifies as a taxable transfer under section 115 BBH. Therefore, it will be taxable in the hands of transferor. Now, to calculate capital gain, we need two things. One is cost of acquisition, and the other is full value of consideration. Cost of acquisition we have. How to determine full value of consideration then? Now, to determine full value of consideration, we can use fair market value or open market value of the asset that we have received in exchange as on the date of transfer. As we wrap up here are the three key takeaways that we can take. First is, crypto taxation is here to stay. That is, it is now a vital part of our financial system. Knowledge is our power, and we should definitely ensure compliance, as staying tax compliant can ensure long-term financial stability. Lastly, let's not treat crypto taxation as an afterthought. As future chartered accountants, let's lead by example, understand the rules, ensure compliance, and educate others. Thank you so much. Thank you for being a lovely audience. Thank you. Thank you, Ms. Nivedi Jain, Ms. Neha Gupta, for presenting this presentation on our new age technology. We value your knowledge and your wisdom.
अभी हम आगे बढ़े उससे पहले मेरे दिल में एक शायरी आ रही है, क्या मुझे इजाज़त है? इजाज़त है? नेकी और पूछ पूछ, इरशाद इरशाद। धन्यवाद। तो अर्ज़ किया है, ये रातें भी गुजर जाएंगी, सूरज दोबारा आएगा। ये रातें भी गुजर जाएंगी, सूरज दोबारा आएगा। तू इंतज़ार कर मेरे दोस्त, अगले अटेम्प्ट में रैंक ही आएगा। सुभान अल्लाह, तुम तो छा गए भाई। And now, as we move forward, I would like to invite a highly respected teacher known for explaining most complex topic in a clear and simple manner. It's our privilege to invite our session expert, CA Dr. Girish Ahuja sir, to lend us his words of wisdom. Please have a huge round of applause for CA Girish Ahuja sir. Sitting on the dais, Managing Committee member of the Ahmedabad branch, CA Avina Malviya ji, 3 speakers, Nivedi Jain from Pune, Het Patel from Ahmedabad, Neha Gupta from Ludhiana, and of course, WICASA Joint Secretary of the Ahmedabad branch, Furkan Buharia ji, WICASA Council member, of course, Eid Kothari, sitting in front of me, the chairman of the Ahmedabad branch, CA Neerav Agarwal, Secretary Samir Chaudhary, Shikha Agarwal ji also WICASA chairperson, and one more gentleman. Where is he? Acha, Fennel Shah is gone. Ladies and gentlemen, let me tell you, sir, they have done a very good job. Please give them a big hand. It's very difficult to come and stand here and speak in front of the crowd. Let me tell you, very, very difficult. And they have done a good job. Nidhi was excellent, of course, confident. She was really confident. But she has not covered many points in that. She was always afraid of clubbing of income. She talked about the clubbing of income of the spouse, not the daughter-in-law, if I'm right. Daughter-in-law, son's wife. You cannot make a gift to the son's wife also, it is a clubbing. You devoted more time in 60 and 61. 60, of course, transfer of income without transfer of asset, and 61, revocable transfer. But what I'm trying to explain, we have section 64, 1, 2, 8, 4. Those are more important than HUF clubbing also. You have left HUF clubbing, you have left daughter's clubbing, daughter-in-law clubbing. But मैं हमेशा सोचता हूँ ये क्लबिंग क्यों होती है? Husband wife clubbing. These days wives are earning more than the husband. So where is the question of clubbing? These days, what gone are the days? जब हम clubbing का काम करते थे, the wife used to be a housewife, and we wanted to create a new file to take a benefit of the slab rate of the individual. But now, where is the question of clubbing? The wife may be earning more than the husband. वो जमाना चला गया, हम कहते थे the girls they used to cook food like their mothers. Now girls drink like their fathers. Drink का मतलब समझना, ये मतलब मत समझ लेना. कंधे से कंधा चलाकर बेटियां चलती हैं और वो ज्यादा अर्न करती हैं. यहाँ देख लीजिए ना, 1 स्पीकर मेल, 2 स्पीकर फीमेल. देखा आपने? 2 girls, female, I mean, उनको समझ नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आती उधर. The 2 girls who are, I mean, there, and 1 boy. So who is more? I mean, the girls are doing much better than the boys now. वो जमाना चला गया जब बेटियां घर बैठती थी. अब जमाना वो है जो बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं. लेकिन डर भी लगता है, वो कहती है प्री मैरिटल ट्रांसफर कर दो. या तो पोस्ट मैरिटल में भी प्रॉब्लम हो गई, राजा और सोनम में. देखा प्री मैरिटल, अरे कौन करेगा प्री मैरिटल में? भाग जाए बाद में लेके. वो जमाना होता था, कहते शादी से पहले उसको गिफ्ट कर दो तो क्लबिंग नहीं होगी. करोगे गिफ्ट? कोई गिफ्ट नहीं करता सर. ये प्री मैरिटल वाली पुरानी बातें हैं बेटा, अब कोई नहीं करता है. तो जमाना बदला है
So please, ये आपको daughter, son, एक और है. If you give to your daughter, son's wife, that also is clubbed. I fail to understand who gives to the son's wife. कोई नहीं देता है. Son को तो दे देंगे. But what I'm trying to explain, she covered everything, but of course, you were supposed to cover those also. I'm not criticizing, please. This is for the next, whenever you do it. As regards setting of a loss is concerned, she mentioned that, but whatever she said about the old regime, new regime, you are not allowed to set up the loss of 2 lakh also. So that's the point you should, because these days everything is new. 90% have gone to the new regime. The old regime has no value now. So change your presentation for next time. New regime is more important these days than the old regime. Correct? Bakish, she had little time, but I'm telling you, she covered very, very nicely. Everything, and full of confidence. Give her a good hand, please. Full of confidence. Hayat Patel from Ahmedabad. Obviously, ज़्यादा ताली लगी है, लेकिन he talked less about a faceless than anything else, let me tell you. He was covering everything, but you should be very careful explaining the faceless, what is an assessment unit, what is the rail of the assessment unit, what is a verification unit, what is, of course, technical unit, what is the review unit. They are more important, you know. You are considering the 2 minutes, 3 minutes you wasted time to bring to the faceless assessment. ठीक है, शाहरुख खान लाई है, nothing wrong in it. What I'm trying to explain, but it is a technical paper. You only have 10 minutes. And in that 10 minutes, you have to do everything. So in those 10 minutes, you should have brought the purpose of faceless assessment. You have brought it. It's not that you have not brought it. But it was more or other things than of the faceless. आप attract crowd को कर रहे थे, technical नहीं कर रहे थे. Be technical when you are going for a presentation of a technical paper. But you have done a good job. Please give me a big hand also. नेहा, पहले बता दूं, ये क्रिप्टो वाला काम करना मत. ये जुआ है, गैम्बल है. Nobody has earned in crypto. बिल्कुल गलत है क्रिप्टो करना. Please don't go for crypto, I'm telling you. At one time when I was told, मेरा friend का बेटा था, sir, he has made money, 2 crores in crypto. That was notional gain. And he has not even a single penny has lost in crypto. हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी वाला काम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. ये बिटकॉइन is only for the time being because government has not banned it. But she covered the topic. It's not that. She has covered the topic well, but she was all the time worried about 30%. Ma'am, 30% is not much. Even you go for KBC, कौन बनेगा करोड़पति, there also it is 30%. Everywhere it is 30%. और खर्चा नहीं मिलेगा. मैंने कहा जुआ खेलो. क्यों दें खर्चा आपको? Did I say you go for a gamble? Why should government pay for it if you are going for a gamble? Even in lottery tickets, if you buy a lottery ticket, you win one. You pay tax on that. You lose others. You don't get deduction or no loss is allowed. It is nothing new. Virtual digital asset or lottery or online game is nothing new. 30% you have to pay tax. Nobody has told you that you should go for gambling, you should go for online games. If you go for it, you win, pay tax. You lose, I didn't tell you to go for gambling. So the government will never allow you that. But what I'm trying to explain, it is a difficult presentation. It's a difficult thing to understand. But she has done a good job for coming out with digital asset, digital currency. लेकिन फिर मेरी एडवाइस है, मत करना. Don't go for ये young boys जो talk about crypto. Please don't do it. You invest in shares is good, but don't go for such type of a thing where 90% are losers. So I'm not talking about that. You were given a topic for that. But she has also done a very good job. Please give her a good hand.
अब मेरा टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज से, यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब बाय ऑप्टिंग फॉर सीए। सीए एक बहुत अच्छा कोर्स है, मैं आपको बता दूं। यू शुड बी प्राउड यू हैव एंटर्ड इनटू ए गुड प्रोफेशन। I joined this profession way back in 1967 and I passed out my CA in 1970. After doing my MCom, I did CA way back in 1970. I'm already in practice for the last 55 years. मेरी एज गिन लेना, आ गई, हो गई, कैलकुलेशन तो हो गई. I have just entered 80, 79 plus. But I'm telling you, I have been telling the students, you have done a good job. You have done a very, very right step you have taken to join CA. You should be proud of your profession. बाकी ये क्या है? देखिए, there is no shortcut to the success. कल भी आपने सुना होगा रजत शर्मा से, मेरे ही यहाँ है, मैं भी श्री राम कॉलेज में था, वो मेरा बहुत जूनियर है, 10 साल से ज़्यादा जूनियर है, वो क्लास ही नहीं अटेंड करता था, मैं वहाँ पढ़ाता था, नो डाउट. आई टॉट देयर ऑल्सो, बट ही वॉज मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. आपको बताऊं, उसके पास 5 रुपए नहीं थे फीस देने के लिए, नॉट इवन 5 रुपीज. अरुण जेटली मेरे स्टूडेंट रहे, उन्होंने उसके 5 रुपए फीस दिए थे. 4 किलोमीटर रोज पैदल चल के घर से आता था कॉलेज की तरफ. नो मनी टू ट्रेवल बाई बस ऑल्सो. एंड यू हैव सीन कहां पहुंच गया. ये सब हार्ड वर्क है. दिस इज हार्ड वर्क. आप ये सोचे वो हार्ड वर्क करे बगैर आ जाएगा, एब्सोल्युटली नथिंग. यू विल हैव टू डू द हार्ड वर्क. एक चीज मैं बता दूं, सीए तो तभी बनोगे जब आपकी किस्मत में लिखा है. उससे पहले सीए नहीं बन सकते. लेकिन इसका मतलब है लिखा तो है ही, बन जाएंगे. नो, डू योर हार्ड वर्क, लीव इट टू द गॉड. द गॉड इज वेरी काइंड. भगवान के ऊपर छोड़िए, अपनी मेहनत करिए. और आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. आपको तो देखिए कितना बड़ा क्राउड है. मैं जब पहली बार कॉलेज में गया 62 में बीकॉम करने, एक भी लड़की कॉलेज में नहीं थी. कॉमर्स कोई करता ही नहीं था. हम कभी उस कॉलेज में जाके देखे कोई मिल जाए, कोई उधर मिले, अपने कॉलेज में कोई नहीं थे. बड़ा दुख हुआ. 65 एमकॉम कर लिया कि अभी कॉम, मैंने कहा एमकॉम करके देख लेते, वहां पर भी कोई नहीं था. अब हमारे जमाने में कोई सीए करता ही नहीं था. देयर वाज नो गर्ल हु वाज डूइंग कॉमर्स, व्हाट टू टॉक अबाउट सीए. अब देखिए इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देयर आर 58% गर्ल्स एंड 42% बॉयज. ये किस लिए हुआ? गर्ल्स बॉयज की वजह से नहीं. गर्ल्स वर्क हार्डर देन द बॉयज. उनके नंबर ज्यादा आते हैं क्योंकि श्री राम कॉलेज, यू गेट इनटू श्री राम कॉलेज, यू यूज्ड टू गेट 98%. अब तो क्यूट हो गया. सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंट थिंग. अर्लियर 98+ श्री राम में एंटर होता था. तो वो गर्ल्स करती थी और बॉयज काम करना छोड़ गए. मैं बार बार बॉयज को बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, आपको ओवरटेक कर रही हैं और बहुत पीछे चले जाएंगे. अपने आप को संभाल लो. यहाँ भी ओवरटेक किया हुआ है. 2 लड़कियाँ, 1 लड़का पेपर प्रेजेंटर है. और जहाँ मैं जाता हूँ यही हाल हो रहा है. प्लीज बदल लो अपने आप को. क्योंकि हमें देखा अपने जमाने में, हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है. मैं याद है सर, मैं आपको बताऊं, 2 झूठ माँ बाप के बड़े बड़े थे. एक, हमेशा माँ ने कभी नहीं कहा मेरी तबीयत खराब है. कभी माँ ने नहीं कहा मेरी तबीयत खराब है. और कभी बाप ने नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे लिए. ये 2 झूठ हमें कहाँ का कहाँ ले गए. ये उनकी मेहनत है जो आज हम इतने ऊपर पहुंचे. लेकिन आजकल का जमाना बदल गया है. मैं बार बार कहता हूं, हम लोग बहुत सैंडविच सोसाइटी में आ गए हैं. हम अपने माँ बाप से भी डरते थे और अपने बच्चों से भी डरते हैं.
ये क्या हो गया? हर माँ बाप कहता है मैं अपने बच्चों से डरता हूं। क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं उनको? क्यों उनको ये बातें करते हो? ताकि उनको फील हो रहा है बच्चे इज्जत ही नहीं करते। क्या हो गया जमाने में? बेटियां फिर भी बेटियां हैं, बेटे तो परवाह ही नहीं करते। उनको पता है कैसे एक्सप्लॉइट करना है। बेटे को खराब करती है माँ और बेटी को प्यार करता है बाप। और वो यही होता है कि माँ दबा लेती है हर बात, बाप को बताती नहीं। मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर जिंदगी में ऊपर जाना है तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। कोई इससे बड़ा नहीं हो सकता। कितना पैसा खर्च करके जो जिंदगी में हमें नहीं मिला, हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड किया है। Have we done it or not? आप everything you are getting it, which we never got in our life. Everything the child is getting. पता नहीं कहां से माँ बाप लाते हैं और बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो परवाह ही नहीं करते। कुछ नहीं है, माँ बाप की तो सुनते ही नहीं है। हमारे यहाँ 4 थियरी है भैया, समीर जी बताऊं। इंस्ट्रक्शंस थियरी, एक बार माँ बाप ने इंस्ट्रक्शन दे दी, खत्म। वो बिल्कुल चलती थी माँ बाप की बात, इंस्ट्रक्शन दे दी, हमने कभी बहस। फिर आया डिस्कशन थियरी, कुछ लोग माँ बाप से डिस्कस करने लग गए थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी माँ बाप की बात मानकर मान लेते। फिर आया डिबेट थियरी, मैं क्यों ये करूं? आप कह रहे हो ये मंदिर जाओ, क्यों जाऊं? भगवान के सिर क्यों पैर लगाऊं? ये क्यों करूं, वो क्या करूं? ये करने रीजनिंग करने लग गए, जवाब मांग देने लग गए। और आप जा गया डिनायल थियरी, जो भी बच्चे को कह दो मना कर देता है, 1 मिनट नहीं लगाता मना कर देता है। क्या हो रहा है सर? ये इतने माँ बाप ने आपके लिए इतना मेहनत करी है, इतने आपको पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं। कम से कम ये तो शुरू कर दो माँ बाप का कि इज्जत करना शुरू कर दो। माँ बाप का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, और किसी का भी हो सकता है, बट आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया है। बच्चों के साथ डरते हैं सब अपने माँ बाप। हर माँ बाप अपने बच्चों से डरता है। मैं तो कई बार सीए के सारे बैठे होते हैं, जब दिन बड़े बड़े लेक्चर देता हूं, तो मैं उनको पूछा, कोई खड़ा होकर बता दे मैं माँ बाप से नहीं डरता। एक आदमी खड़ा, सॉरी बच्चों से नहीं डरता, एक आदमी खड़ा नहीं होता। ये आपकी रेपुटेशन हो रही है कि बच्चों से माँ बाप डर रहे हैं, आप सेंटिमेंटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं आपको बोलूं, इतना बढ़िया प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया है, आप एक चीज को ध्यान रखिए कि मेहनत करनी पड़ेगी और अपने माँ बाप की इज्जत साथ में कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, फेल होना तो इसमें तो सीए फेल तो हो सकता है, और मोस्टली होते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता, आपके माँ बाप अलग कमरे में जाकर रोते हैं, लेकिन आपको दिखाते नहीं है कि मेरा बेटा फेल हो गया। ऐसा नहीं है, और फेल होने में घबराना नहीं चाहिए। डोंट बॉदर, गिर के ही आदमी ऊपर जाता है। ऐसे ऐसे लोग देखे जो 4-4, 5-5 अटेम्प्ट लग गए, लेकिन आज वो कहां पहुंच गए मैं आपको बता नहीं सकता। यही झुनझुन वाला, मैं उसके घर गया, स्वामी रामदेव जी के साथ कोई शेयर के लिए गया, तो उसका नशा था, कुर्सी पे बैठा था। सर मुझे 2 ही चीज का है, एक पावर और एक मनी का नशा है, और जो शेयर मैं खरीदता हूं मार्केट वहां चली जाती है। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, झुनझुन वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट था। भगवान की बात है, कोई उसको बीमार रहता था, अब उसका भाई देखता है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। बड़े बड़े तगड़े तगड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफरेंट फील्ड में जा चुके हैं। लेट मी टेल यू, वेर एवर आई गो, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, आई फाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट द टॉप पोजीशंस। कोई सीएफओ है, कोई सीईओ है, कोई किधर का काम कर रहा है, और वो इतनी मेहनत करके ऊपर आए हैं। विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग सो हाई। ठीक है, मुकद्दर चाहिए, डेस्टिनी के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। अनलेस इट इज डेस्टाइन्ड, you cannot become chartered accountant, but you have to work hard and leave it to the God, and the God is very kind. वहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता है। आप मेहनत करिए, आप कभी मत सोचिए कि मैं फेल हो गया हूं। होगा, होते हैं, और सीए में, और कोई तुम्हें कहे ना तू फेल हो, कहते तू करके देख ले भाई, तू करके देख ले, अगर सीए तेरे को लगती है तो आसान।
सबको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिफिकल्ट है, सबको पता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है कि इसने बहुत मेहनत करी है, और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है तो मेहनत करके बना है, ऐसे नहीं है। यहाँ एंट्री आसान है, बाकी में एंट्री डिफिकल्ट है लेकिन एग्जिट बहुत आसान है। यहाँ एंट्री आसान है, एग्जिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एग्जिट डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, हम लोग किस काम के लिए हैं, मेहनत करने के लिए आए। आज भी मैं एट द एज ऑफ 80 365 डेज काम करता हूँ, 365 डेज, और कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपको मेहनत करनी है, लेकिन सब कुछ आप करते हैं, पढ़ाई के टाइम मैनेजमेंट नहीं है। प्लीज डू योर हार्ड वर्क, करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई के टाइम प्लीज डिवोट टाइम टू योर स्टडीज, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। दुनिया में सब कुछ करना अलाउड है, मैं नहीं कहता ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, करिए, बट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कीजिए। और अब जो जमाना आ गया है ना, वो क्या है कि हार्ड कॉपी देखना कोई चाहता नहीं है, सब ऑनलाइन की बातें करते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन जब भी आप गूगल्स में जाइए या कहीं भी जाइए, देख लीजिए वो अपडेटेड भी है कि नहीं है। कुछ नहीं, 90% वो अपडेटेड चीज नहीं है। सो प्लीज गो फॉर स्टडीज। ठीक है, एक टीचर हमेशा कहता है कि तुम क्लास अटेंड करो, बाकी आर्टिकल मत करो। मत सोचना, जिसने जिंदगी में आर्टिकल नहीं किए वो जिंदगी भर पछताएगा। और अब तो आपका कोर्स ही ऐसा हो गया, you have to do 2 years articles and you cannot appear in any exam। हमारे जमाने में अलग था। जब मैं सीए करने गया पहली बार, मुझे एक डायरेक्टरी पकड़ा दी टेलीफोन की, इसके टोटल करो, टेलीफोन डायरेक्टरी टोटल कीजिए। उन पर कैलकुलेटर भी नहीं होता था, कैलकुलेटर भी नहीं था, देयर वाज नो कैलकुलेटर। मैं 4-5 दिन टोटल करता रहा। टोटल तो करना ही पड़ेगा, 6 डिजिट का होता था तब, 8 डिजिट नहीं था टेलीफोन डायरेक्टरी 6 डिजिट। मैं टोटल करता रहा, बहुत आया। 7वें दिन एक सीनियर ने कह दिया, अरे क्या कर रहा है? मैंने कहा जी टोटल कर रहा हूँ। कहते कुछ भी लिख दे, उनको भी क्या पता, उनके पास भी कैलकुलेटर थोड़ी है, लिख दे जो मर्जी लिखना। ये सीनियर हमें खराब करते हैं। मान ले, ये सीनियर का बात मत मानना। सीए में एक ही प्रॉब्लम है, एक दूसरे को डिस्करेज करते हैं, एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि इसको बेवकूफ बनाए। डोंट लिसन टू एनीवन, प्लीज डू नॉट लिसन टू एनीवन। ये सीनियर हमेशा कहेंगे, टीचर हमेशा करेंगे, छोड़ो आर्टिकल, आप अपने वो करो, क्लासेस अटेंड करो, एग्जाम पास करो, बाद में कर लेना। अब तो खैर 2 साल आपको आर्टिकल सीरियसली करने चाहिए, लेकिन क्या होता है, द आर्टिकल्स कम टू मी थ्रू समबडी, ज्यादा पे जान पहचान के मिलते हैं। तो कई आदमी काम नहीं करना चाहते, और कई मेरे को कहता सर मुझे बहुत काम देते हैं, बहुत काम देते हैं, उसको कुछ नहीं कहते। मैंने कहा जिसको काम देते हैं उसी को काम दिया जाता है जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो कहता तू आया ही मत कर यार, मेरे यहाँ मत आ, तेरे को आर्टिकल चाहिए। हमारे जमाने में कोई स्टाइपेंड नहीं होता था, not a single penny stipend. I gave 5,000 rupees as a security for doing CA। 5,000 1967 में कितना अमाउंट था आप अंदाजा लगा लीजिए। 5,000 रुपये दिए, होते रिफंडेबल तक, कभी रिफंड नहीं मिला, ना स्टाइपेंड मिलता था, कभी कभी कन्वेंस भी नहीं, 15-16 रुपये वो भी नहीं मिलते थे। लेकिन हम आज भी अपने उन सीनियर्स की याद करते हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया, कहाँ हम पहुँच गए उनकी वजह से। और आजकल के लड़के क्या करते हैं, आपके पास कितना काम है, इंटरव्यू लेते हैं, उसका सीए का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके पास कितना काम है, कितनी छुट्टी दोगे, बाहर भेजोगे कि नहीं भेजोगे। ये अब तो खैर छुट्टी का नहीं आएगा अगर जो पाल हो गया, नहीं तो यही काम करते रहते हैं। आज कितनी स्टाइपेंड दोगे? सर ये स्टाइपेंड कुछ नहीं है, आपको वो काम सिखा रहे हैं, मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, उनकी इज्जत कीजिए। वो उन्होंने आपको सिखाया है, और आज भी हम अपने उन गुरु को याद करते हैं। क्योंकि मैं ऊपर क्यों देख रहा हूं कि मैं ही 80 का हो गया तो गुरु तो ऊपर चले ही गया होगा बाय दैट टाइम। तो मैं बता रहा हूं कि प्लीज अपने बॉस की, अपने एम्प्लॉयर की इज्जत करना सीखिए।
वो बहुत कुछ आपको सिखा देगा अगर आप इज्जत करेंगे। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते ही आप इतनी बड़ी बैलेंस शीट साइन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सीखेंगे कहाँ से? यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड यू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप उस जहाँ पर टाइम मिला है 2 साल का, अब तो 2 ही है ना आर्टिकल पीरियड, 2 ईयर पीरियड ना, हमारे ज़माने में तो 4 साल होता था, 4 ईयर। और उसमें क्या था, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट पास कर लो तो 3 साल होता था, मैंने 3 साल में किया था, अब 2 साल है। अब 2 years इज वेरी शॉर्ट टाइम, बट आई एम टेलिंग यू, जो जिंदगी में हमने सीखा वो प्रैक्टिकल करते हुए सीखा है, थियरी में कुछ नहीं सीखता है। नोबडी लर्न्स फ्रॉम थियरी, इट इज ऑल प्रैक्टिकल। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, इतनी लोग हैं सीए कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, मैंने देखा सब जगह, लेकिन सीरियस नहीं लेते। सीरियस लीजिए और अपने पार्टनर की बात मत सुनिए जो दोस्त है। एक और मैं आपको बता दूं, हर स्टूडेंट को किसी ना किसी सब्जेक्ट का फोबिया होता है। फोबिया समझ गए? Sometimes you may like income tax, you may not like indirect tax, you may like accountancy, you may not like कुछ और पेपर, ये फोबिया होता है। और कई बार तो किसी पर्टिकुलर चैप्टर का ही फोबिया होता है कि ये मुझे नहीं आता। एवरीवन, मुझे भी फोबिया था, सबका होता है। ये फोबिया टीचर दूर नहीं करेगा, अपने फ्रेंड से सीखिए जिसको वो आता है वो टॉपिक, और आप उसको वो सिखाइए जिसको जो उसको नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूं, ये फोबिया ऐसा खराब है कि आज तक जब कोई एक्स वाई ए बी आ जाता है, क्योंकि मुझे अर्थमेटिक वो अलजबरा नहीं आता था, जो हमारे को अर्थमेटिक का वो कहते हैं मैथमेटिक्स, वो अलजबरा होता था उस दिनों में। मेरे 50 मार्क्स आते थे अर्थमेटिक में, 50 मार्क्स आते थे टेक्निकल ड्राइंग में, और एक अलजबरा में मुझे एक ही आता था साइमल्टेनियस इक्वेशन, 5 नंबर, 45 नंबर 0 आता था। मुझे डर लगने लग गया, इतना ज़्यादा फोबिया था, कोई ए बी आ जाए, एक्स वाई आ जाए, मेरे से नहीं होता था। इवन मैंने जब पीएचडी अपने करा, उस पर जो आया तो वो भी उससे करवाया, भैया ये मेरे बस का नहीं, ये फोबिया था। आई एम बीन टोल्ड कि मैथमेटिक्स ज़्यादा सिंपल है अलजेब्रा और अर्थमेटिक्स से, लेकिन एक दिमाग में बैठ गया कि यार ये नहीं आता मुझे। आपके दिमाग में भी बैठा होगा, अरे यार ये इनकम टैक्स बेकार है, या ये वाला सब्जेक्ट नहीं आता, या ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आता। अपने फ्रेंड से पूछिए, टीचर से नहीं। आई विल टेल यू, वो आपको ऐसा सिखाएगा, क्योंकि अगर उसको आता है तो आपको क्यों नहीं आता, और ये चीज़ आपको आती है तो उसको क्यों नहीं आती। अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो आप नजर आएगा वो ज़्यादा सिंपल था जिसको मैं इग्नोर कर रहा था। ये इग्नोर करना ही गलत है, और हमें यही होता था। और बाकी तो मैंने ये बोला कि प्लीज़ अगर फेल हो जाए तो चिंता मत करिए, नया स्लेट से काम कीजिए। कोई पुरानी किताब नहीं पढ़नी, कोई नोट्स नहीं पढ़ने जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, बिल्कुल न्यू स्लेट पकड़िए और न्यू बुक पढ़िए, उसको पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना फर्क आएगा। नहीं तो ये कहते हैं ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, नहीं। एंड प्लीज डू नॉट सी द इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन देखनी नहीं है, इलस्ट्रेशन को बंद करके आपको सॉल्व करना खुद, चाहे आप टाइम ज़्यादा लगाएं। लेकिन क्या होता है, हम कुछ तो नीचे रख लेते हैं और थोड़ी देर के बाद नहीं समझ में आया तो यूं करके देख भी लेते हैं। इसको अवॉइड कीजिए प्लीज़। 1 घंटा ज़्यादा लग जाए लेकिन खुद अपने हाथ से करेंगे, जिंदगी में नहीं बोलेंगे। देर आर मिस्टेक्स विच वी डू एंड वो हमें पता लग जाए। सो मैं एक आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सोच के चलना, आपने बहुत अच्छा कोर्स ज्वाइन किया, ये सोच के चलना जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सोच के चलना सीए सिर्फ ऑडिट और इनकम टैक्स नहीं है। सीए हैड डन वंडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं बता रहा हूँ, इंडिया में अगर एक सीए जब बाहर जाता है, ही इज रिस्पेक्टेड सो मच, वो कहते हैं सीए ये है, सीए जो असली सीए है। ये सीपीए बीपीए कुछ नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आर रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका एम होना चाहिए, ठीक है 1 साल ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। पहले तो मैं कहता था ये कुंभ का मेला कहाँ है जो हर 12 साल बाद आएगा, हर 6 महीने बाद आ जाता है। अब तो हर 3 महीने बाद ही आ रहा है, मेरे ख्याल बदल गया ना, 3-3 महीने बाद ही, 4 महीने बाद आ रहा है। तो क्या दिक्कत है?
देखिए 80% ने तो फेल होना ही होना। मेरे जमाने में 3% रिजल्ट था, 3%। मेरे से ऊपर 50 गायब थे, मेरे से नीचे गायब थे, अकेला मैं लटक रहा था बीच में। मैंने कहा ये कैसे हो गया। अब 20%, 25% होगा। 75% जो फेल हुए ना, उनको अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, कहाँ आपने गलती करी है। कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको नजर आएगा गलती हमारी थी। कुछ तो वही फोबिया वाली चीज, छोड़ दो, समझ में नहीं आएगा, ये तो बेकार है, ये आएगा नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आएगा, चांसेस पे छोड़ दिया। नहीं करना है। जो चीज नहीं समझ में आई किसी से पूछनी है। हमेशा हम छोड़ के जाते हैं। वो किस्मत अच्छी है, पास हो गए, क्योंकि वो सवेरे आया नहीं एग्जाम में। जो रात को पढ़ गए वो सवेरे आ गया, पास हो गए। जो रात को छोड़ गए वही आया, फेल हो गए। सो मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे बाद भी ये सारे बैठे चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ के ही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कोई ऐसे तो बन नहीं सकता। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कीजिए। ये पार्टियां भी करनी जरूरी है, ये प्रोग्राम भी जरूरी है, ये सब कुछ जरूरी है। कई लोगों को मैं कहता हूँ एग्जाम में दिनों में क्या करते हैं, आजकल तो दाढ़ी बनाने का फैशन हो गया। हमारे जमाने में दाढ़ी नहीं होती, वो दाढ़ी नहीं बनाते थे। क्या हुआ, वो टाइम नहीं है, मैं तो पढ़ाई में बड़ा बिजी हूँ। लड़कियां वो सिर नहीं धोती थी, वो टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये सब नाटक है। पिक्चर नहीं जाते थे 2-2 महीने। मैं कहता हूँ पिक्चर जाइए, 3 घंटे वेस्ट करेंगे तो घर आके याद रहेगा मैंने 3 घंटे वेस्ट किए और मैं उसको सीरियसली पढ़ूंगा। कभी ऐसा नहीं सोचिए कि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्शन लगा लूं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और बाकी सब जो मर्जी करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा, जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन जो करना है उसकी तरफ देखिए। आई एम अश्योरिंग यू कि मैंने बड़े बड़े लोगों को, मेरे तो स्टूडेंट ही रहे, 3 तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेरे स्टूडेंट थे। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर मेरा स्टूडेंट था, वो तो ठीक है, मैं उसके बाद छोड़ के किसी और जगह आया, वो भी मेरे स्टूडेंट थे। ये रजत भी दूसरी क्लास में था, मेरी क्लास में नहीं था, लेकिन ही इज वेरी क्लोज टू मी। मैं आपको बताऊं, एक इंसिडेंट बताता हूं, फिर मैं छोड़ता हूं। रजत शर्मा वही रहता है जब मैं रहता हूं, पास में रहता है। स्वामी रामदेव जी आए, स्वामी रामदेव जी को जानते हैं, मैं उनके बोर्ड में हूं, मैं उनका ऑडिट कमेटी चेयरमैन भी हूं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं उनका सबका। तो मेरे पास आए रामदेव जी कि हमने ये कंपनी ली रुचि सोया, आपको डायरेक्टर बनाना है। मैं स्वामी जी मैं नहीं बनूंगा डायरेक्टर। क्या हुआ? मैंने सर आपके यहाँ क्लोजली हेल्ड कंपनीज है, प्रोफेशनल्स नहीं है, एंड ये लिस्टेड कंपनी है, वी नीड टू हैव प्रोफेशनल देयर एंड यू विल नॉट एग्री टू दैट। नहीं करूंगा। 15-20 दिन का दोबारा आए, मैंने फिर मना कर दिया, नहीं आना, मैं नहीं बनूंगा स्वामी जी। कहते जेटली जी बोल के गए थे कि आपको कहेंगे तो आप बन जाएंगे। मैं कहा मैं नहीं बनूंगा सर, क्योंकि मैं स्टेट बैंक का भी रहा 6 साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मुझे तीसरी बार आए, कहने लगे आहूजा साहब एक बात बताओ। मैं क्या जी, आप क्यों नहीं मान रहे? क्यों बता नहीं सर मुझे ये। कहता रजत शर्मा मान गया, आप क्यों नहीं मानते? क्या बोला? रजत शर्मा मान गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, आप क्यों नहीं मानते? मैं सर मान गया। कहता हाँ। मैं चलो मैं मान लेता हूँ। रात को मैंने रजत को फोन किया, मैंने तुम मान गए हो? कहता मुझे कहते गिरीश जी मान गए, आप क्यों नहीं मानते? बात को समझे, ये बिजनेसमैन एटीट्यूड। वो मुझे कह रहे हैं कि रजत मान गया है और रजत को बोलते गिरीश आहूजा मान गया, तुम क्यों नहीं मान रहे? और बन गए हम डायरेक्टर। बनना पड़ा। मैंने कहा कहता सवेरे मेरे पास आओ, ब्रेकफास्ट करो, लेट अस डिस्कस ऑन दिस। चलो मैं हो गया। 1 महीने बाद छोड़ दिया उसने। मैंने कहा यार तुमने जो मेरे को बगैर पूछे छोड़ दिया? कि सर बात ये है, मेरा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकता था, मुझे ध्यान नहीं रहा। मेरे यहाँ तो इतने एडवर्टीजमेंट आते हैं, स्वामी जी के इतने एडवर्टीजमेंट है, मैं तो टीवी चलाता हूँ और तो मेरा तो पार्टी इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे को तो गलत हो गया, मैंने गलत ले लिया तो छोड़ रहा हूँ। मैं कहा मैं भी छोड़ रहा हूँ। कहता मत छोड़ो, 2 ही डायरेक्टर है, बीमारी में मुश्किल पड़ जाएगी, हाथ जोड़ता हूँ, आप कंटिन्यू करो। फिर मैंने कोई दूसरा लिया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन का तरीका देखिए मुझे मनाने का। वो मान गए हैं, आप क्यों नहीं मानते? उसे कहते वो मान गए, आप क्यों नहीं मानते? ये एटीट्यूड होता है। और आज वो कंपनी जो 14,000 करोड़ की थी, आज 36,000 करोड़ टर्नओवर है। 36,000 crore of a man who does not have a bank account.
स्वामी का बैंक अकाउंट भी नहीं है, एक भी पैसा नहीं लेते, नॉट ए सिंगल पेनी। कभी कंपनी से कोई पैसा नहीं लेते, ना स्वामी जी लेते, ना आचार्य बालकृष्ण लेते। लेकिन कंपनी चैरिटी वाली कहां पहुंच गई। और आपको यह आश्चर्य दे के जा रहा हूं, 5 साल में 1 लाख करोड़ टर्नओवर होगा। ये है मेहनत जिसने की। एक एक आदमी के पास शेयर, जब आईपीओ निकाला, रोड शो पे गए, खुद गए, अमेरिका भी सब जगह गए और यहां भी गए, मैं कई जगह तो मैं ही गया उनके साथ। मैं ये कह रहा हूं, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। उन्होंने मेहनत करी और आज जिसको योगा नाम किसे नहीं था, मेरे को ये बताते थे कि मैं कॉलेज में स्कूल में जाता था तो टीचर उनको कहता था, प्रिंसिपल को, कि मेरे से योगा करा लो फ्री। वो 4-4 घंटे बाहर बिठा देता था और बाद में कहता था नहीं हमारे पर नहीं बनाना। वो 2-2 आदमियों को पकड़ के योगा कराते थे। आज कौन गुरु है योगा का? वही आदमी है। ये 25 साल की हिस्ट्री में कहां पहुंच गए ये योगा वाले। ये है योगा का कमाल। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जाते वक्त, रोज आना, थोड़ा सा योगा जरूर करिए, प्राणायाम करिए, आपको इतना अच्छा लगेगा, पढ़ाई में भी दिल लगेगा। प्लीज डू योगा एवरीडे। मैं रोज करता हूं योगा, आज भी करके आया हूं, चाहे थोड़ा दिन करके, लेकिन योगा करिए। और प्राणायाम तो इतना अच्छा बच्चों के लिए है, मैं आपको बताऊं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो प्लीज डू योगा। और ये याद रख लेना, मेरी शक्ल याद रख लेना कि जबरदस्ती जी डायरेक्टर क्यों बने थे, लेकिन योगा जैसा चीज कोई नहीं है। कल ही तो निकला है, परसों, और आप करके देखिए कितना अच्छा लगेगा। कल ही निकला है योगा, तो कल भी वो वहां पर थे कुरुक्षेत्र में, चीफ मिनिस्टर। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनके यहां नहीं आता है, कोई ऐसा नहीं है। एंड योगा अगर वर्ल्ड में कोई लेके गया है तो ओनली 1 मैन, एंड दैट इज स्वामी रामदेव। तो मैं ये कहता हूं, अगर वो अनपढ़ आदमी कहां का कहां पहुंच सकता है, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें तो पहुंचना पड़ेगा ही। यही देखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। Thank you so much, CA Girish Ahuja sir. We are blessed to hear your words. It truly holds great value for us. As the old saying goes, spare the rod and spoil the child. While it still holds true, as CA students, it's our responsibility to not let our parents touch the rod, but put in all our efforts to make our parents, make our teachers proud. CA Girish sir, your words will truly be remembered. I would now request Mr. Furkan Buharia, Joint Secretary, WICASA, Ahmedabad, to deliver the vote of thanks. Please have a huge round of applause. Hello. A very warm good afternoon to everyone present here. On behalf of WICASA Ahmedabad, I extend my heartfelt gratitude to esteemed CA Speaker, CA Girish Ahuja sir, and your presence has truly inspiring. We are honored to have had opportunity to learn from you. Your clarity and insight turned the session into a true masterclass. We are also privileged to have CA Abhinav Malavya sir, respected MC member, with us on the dais. Thank you sir, your constant guidance and encouragement. The big thank you to our brilliant paper presenters, Ms. Nivedi Jain, Mr. Het Patel, and Ms. Neha Gupta for delivering power-packed, thought-provoking presentation and gave us a fresh perspective. And of course, kudos to the organizing team and amazing audience, because events like this aren't just made by the speakers and mics, but energy and enthusiasm in the room. With mind little sharper and spirit little higher, let's carry the momentum forward, and not just a session, but every step ahead journey. Thank you everyone. The lights are ready, the camera roll too. The frame stands empty, waiting for the faces to bloom. Memories have been created, waiting to be clicked. We request the dais to come forward for a click.